both in Kalamazoo and in Elaine, man. Look at this. This is how Americans have fun in summer. Yes, sir. ये एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे मर्सर आइलैंड है जहाँ पे बिल गेट्स का भी घर होता है या होता था. अमीर अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे. About 15-20 minutes from my house. इस इलाके का नाम है मर्सर आइलैंड. और आज यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का वो भी था, क्या बोलते हैं उसको, परेड, जिसमें डेलीगेट है माशाल्लाह मिस्टर ज़ैद. तो he came here, then we stayed back for the summer parade. Sorry, summer camp, not a camp, what is it called? Summer fun activities, whatever you want to call it. Yeah, splash times fun. I think these are probably they're advertising for their little companies. ये एक्चुअली एवरी टाउन में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हर टाउन में होता है और तकरीबन एवरी वीकेंड होता है. For the children to enjoy, the families to enjoy. Yes, sir. City of Mercer Island, welcome to you. Full of flavor, no sugar. Boy, there are lots of little booths you can buy stuff. Yes, sir. All kind of drinks. All kind of drinks, all kind of food. Pops. Moms and pops. Seattle pops, man. It's an every weekend thing. There's so many small towns here near Mercer Island in the suburbs of Seattle. You can go anywhere, buy stuff. With the kids, you can have lots of fun in the summer activities, man. ये देखें क्या क्या कर रहे हैं ये. तस्वीरें खिंचवाएं माशाल्लाह. The kids. Whoa. Winter and summer. It's called Thrift Shop. यहाँ के लोगों को अमेरिका के चीज़ों की तो खैर वाकफियत है. I'm sure कि Kalamazoo में भी इस तरह के फन एक्टिविटीज़ होते रहते हैं. एक्चुअली मैंने पिछले साल जो वीडियो एक बनाई थी, पायलप में बहुत बड़ा वाशिंगटन स्टेट फेयर होता है, बहुत बड़ा थ्रू आउट द समर. उसमें करीब 500 तो मैंने कम बताया, 1000-1500 दुकानें होती हैं. बहुत मेरे यूट्यूब पर है वो चैनल, वो वीडियो. यानी पूरे अमेरिका से लोग आते हैं वहाँ पे वाशिंगटन स्टेट फेयर में. और तमाम चीज़ें खाने का तो बेहिसाब किस्म के स्टॉल्स जस्ट फॉर फूड, और फिर बॉन्साई, और फिर हॉर्सेस, और फिर यू नेम इट, दे हैव ऑल दैट स्टफ देयर. अब आप ये देखें कि यहाँ पर तो खैर एंडलेस ही हैं शॉप्स. Well, then you've got all these fire pizza, all kinds of ice cream, man. And then you keep going to the streets, adjacent streets where you have Thai food. And to be honest with you, I'll tell you, there are a lot of different halal food trucks around here as well. So the Muslim population has increased. And if you go look for halal, there's a lot of food trucks. Some of them I personally know because they come to the masjid and all that. So there are a lot of them. You could get anything you want. Even they have breakfast, they have the burritos, and
and you can make a lot of vegetable items. You can make lots of fish items. So I am not going to go to the other side, but this side I will come here and check out what they have here. Brain rules for aging well. Wow, this is something that interests me because I just wrote a booklet on Brainy Guide. Yeah, Island Animal Hospital. This is an island, yeah, Mercer Island. There's a very, very rich people live here. I mean, the types of Bill Gates and stuff. तो यहाँ पे माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें हैं कि आप अगर आएँ तो कुछ घंटे तो आसानी समझिए कि आप गुजार सकते हैं विद फन। आप देखें कि अमेरिका के कल्चर में ये है कि कहीं पर भी कोई चीज़ अगर आपने गार्बेज है तो खुशी को आप अमूमन नहीं देखेंगे 99.9% लोगों को कि वो खुद से कहीं बाहर डाल दें, दे पुट इट इन दोज गार्बेज कैंस। बल्कि अगर अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, कोक कैंस हैं तो इट विल हैव टू गो इन द रिसाइक्लेबल बिन। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इलेक्शंस अब आ रहे हैं अगले महीने और फिर नवंबर के लिए, तो उसके भी बहुत से लोग हैं। तो एनीवे देयर आर lots and lots of stalls here with everything you can imagine. Yeah, and it's like an advertisement and marketing for them. So it's endless. It's endless. Mercer Island is very big. And if you keep going, you will see their kids are having fun there as well. Some activities for the kids. Yeah, keeping the kids busy. It's the job of the parents to give proper upbringing and training to the children. Man, oh man. Yeah, and there's all these little mechanical robotics items. He's an Asian guy, Chinese American, teaching kids how to do the Chinese and an Indian. Subhanallah. Yeah. Well, you know this, and all these engineering feats, it's either the Indians or the Chinese who are getting ahead. And the bottom line is hard work. And I don't know what they eat, man. I don't know. I'm not smart. But those people who are smart, well, it's, as they say, 1% inspiration, 99% perspiration. You got to work hard, man. Work hard if you are, if you want to get ahead in life, man, oh man. You got to be a hard worker, man. Yep. All right, here's a good old American flag. Yes, sirree. Love it. So I'm going back to that music stage. And probably buy some food. तो मेरे जो दोस्त हैं और अगर किसी और ने YouTube चैनल देखा, मिक्स कर दिया मैंने उर्दू और इंग्लिश, तो just enjoy it. And by the way, yes, ये आइलैंड है, ब्रिज कनेक्ट करता है दूसरे आइलैंड से। सियाटल में भाई इतने आइलैंड्स हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वाटर कनेक्शंस हैं कि unbelievable. So that makes it very, very pretty. I think, I mean, after having lived in so many places, including many places in America that I have lived in and traveled, Seattle happens to be one of the most prettiest city. Slight exaggeration, it is the best. It is the best, not an exaggeration, because लोग कैलिफोर्निया को समझते हैं। कैलिफोर्निया में बहुत दफ़ा जा चुका हूँ recently because of my work. And I still think that Seattle is the best. I mean, outside of Seattle, यहाँ पे इतनी जगह घूमने की है कि आप यहाँ पे आएंगे तो you will love it. And a happy-go-lucky time of people, including the seniors, man. Go for it.